Okay, so I think I can begin with the introduction. So, hi, I am Fatma. Those of you who have been with us throughout this learning series would know me by now. So, this is the fourth session that we're having as part of the learning series, and this time we have Qaiser Khan. I will let Qaiser do his introductions. I would just like to say that I think we can begin now officially, and this call is being recorded, and we have been uploading all our learning series session on our YouTube channel. I will put the link of our YouTube channel in the chat as well, and we will be posting the recording of this particular session as well for those who couldn't attend or who can't attend the full session. So thank you. Kesser, the floor is open to you. Okay. Hi everyone. Today we will be discussing about SOC 2. It's a security standard, security and privacy related standard. We will learn basics about it, what it is, how it differs from other standards, and how to implement it. It is going to be a long session and very technical session. So some of you might consider it a very boring session as well. Okay. So, little basics about me. My name is Qaiser Khan. I have been in this field for nearly 14 years. Started as software engineer, then worked in multiple roles in multiple organizations. Right now, I am working as solution architect at Creative Chaos. And I have implemented SOC 2 and HIPAA and some other frameworks in different organizations. So let's dive into it. By the way, just a quick question. Is there anyone here who doesn't understand Urdu? Anyone? Okay, so everyone does understand Urdu. So I will be using mixing both languages here. Okay. So starting with SOC 2, you might have heard about it. It's a very common name and often used in IT industry. So what it is? Really, basically, this is the definition. Service organizations control SOC reports establish trust between a service provider and their clients. An independent certified public accountant conducts the report to validate the internal control of the organization providing a service. Okay. So ये basically है क्या? SOC 2 अगर मैं उर्दू में थोड़ा सा बताऊं, सिर्फ आपको ये बताता है कि आप कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. So आप और आपके क्लाइंट और कस्टमर के दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए. फिर बाद में आगे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे क्या ये कंट्रोल्स हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दोस, हाउ अ पब्लिक अकाउंटेंट कंडक्ट्स योर ऑडिट regarding these. So moving forward, SOC is defined by American Institute of Certified Public Accountants, AICPA. They define different standards of and SOC 2 and other SOC related frameworks as well. SOC 2 has 5 trust service criteria. So in SOC 2 terminologies or just SOC terminology, they are just called trust, that you are establishing trusts. So there are a total of 64 individual requirements for these 5 service criteria for these 5 trusts. There is something called control. Control is a basic building block of SOC 2. Okay. आप जिस चीज में भी जाएंगे, जहां भी करेंगे, आपको यही बताया रहेगा कि आपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना है. So you are controlling the data and privacy and workflow of all of your application in this process. So it is officially defined as the security measures you put into place to satisfy these requirements, the 64 individual requirements. That's called control. Control can be policies, procedures, rules, mechanisms, or anything else as well. And there, each of the 64 requirements might require different controls, and one control may satisfy one or more requirements. So officially you have 64 individual requirements, but there are around 280 controls for these. So one more thing regarding SOC 2.
In technical terms, SOC 2 is an attestation report. It's not a certification. So often in this industry, people call that we are SOC 2 certified or we have SOC 2 certification. It has become a very common practice. But technically, SOC 2 is not a certification. It is an attestation report. Attestation report is something that management provides the evidence to the auditor, and auditors only check the evidence provided by the service. Okay. While the certification is when the auditor comes into your system and checks your system. तो SOC 2 में ऑडिटर आपके सिस्टम में कभी नहीं आता, वो सिर्फ जो आप एविडेंस दे रहे हैं उसी को चेक करेगा. अगर कभी ऑडिटर को लगता है कि आपने कोई किसी किस्म का एविडेंस मिस किया है किसी कंट्रोल के अगेंस्ट, तो वो आपसे वो एविडेंस ओवर द ईमेल या जो भी आपका कम्युनिकेशन चैनल है उसके थ्रू पूछ लेगा, लेकिन कभी आपके सिस्टम के अंदर आकर चेक नहीं करेगा उन चीज़ों को. सो दिस इज बेसिक्स अबाउट SOC 2. सो SOC 2 को हम लोग क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस. रिगार्डलेस आप आईटी इंडस्ट्री में किस फील्ड में हैं, आपको SOC 2 इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट होता है. अगर आपने SOC 2 किया हुआ है तो जितने भी आपके पार्टनर है, क्लाइंट्स हैं, उन्हें पता है यू आर फॉलोइंग द बेस्ट स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री. इससे बेहतर नहीं है. फॉर मैनी ऑफ यू हु आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके लिए ऐसी है कि आप कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. नो वन इज फोर्सिंग यू टू फॉलो दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, but you get a sense of achievement. You know you are doing something good by following these. So same applies to SOC 2 in terms of security and privacy. It protects your brand reputation. जब आप SOC 2 को फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सारे कस्टमर, आपके कंपेटिटर्स, उन्हें पता है कि आप यू आर डूइंग द बेस्ट देयर इज टू प्रोटेक्ट योर कस्टमर डाटा. तो आपके ब्रांड रेपुटेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ लैक्स आपके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं, तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन को बहुत हर्ट करते हैं. इवन फेसबुक इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम दैट कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल. फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आज तक रिकवर नहीं कर सकी, तो छोटी आपकी कंपनीज कैसे रिकवर कराएंगी? एंड इन यूएसए देयर हैज बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर data breach has completely ended a company. So SOC 2 means you are doing everything that is to protect your customer data. It distinguishes you from the competition, especially when you go with big contracts, enterprise level and government level contracts. Everyone has claims to privacy and security that they are implementing it, but they don't have actual proper evidence. SOC 2 is that evidence to back up your company's claim that you are following all the privacy and security standards. You can attract more customers, especially in terms of government and enterprise clients. They prefer that you have either SOC 2 or a similar framework, which we will explain a bit later on. So that helps you get more or higher paying customers as well. And obviously you improve your services based on this. You streamline your organization processes and controls. जब भी इवन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैंने ये वाले सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं. So all of your processes are more streamlined and better. It helps you save time and money. SOC 2 or attaining SOC 2 is a lengthy process and very tiresome. Okay, इसमें आपका काफी टाइम लगता है, but it's still easier to get this rather than other frameworks which we will explain later on, like ISO 27001. That takes even longer than this. So having SOC 2 means that you are satisfying those criteria as well. So it's easier for you to get those kind of certifications. So how does SOC 2 differ from other certifications? So there are
a lot of other standards defined by different organizations that are followed throughout the industry. Some basic ones are HIPAA, which is related to health industry. HIPAA and SOC 2 are about 95% the same. So in technical terms, HIPAA includes everything there is regarding SOC 2, then implements a couple of more controls. Then there are high trust. High trust by high tech that encompasses basics of SOC 2, HIPAA, NIST, and COVID. So if you have SOC 2, so you have already completed about 60-70% of high trust criteria. ISO 27001, which is second most common framework after SOC 2, that also encompasses all of SOC 2. There are about 96% of same controls in both of these. Okay. If you have SOC 2, then you can achieve all of these certification much faster than implementing them from scratch. Now, there are different standards in SOC. There is SOC 1, there is SOC 2, then there is SOC 3. SOC 2 has two further types, which we will explain later on. So SOC 1, that deals with financial control statements and reporting. आप SOC 1 को तब इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपकी कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो उसके कस्टमर के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल, यू आर अ कलेक्शन एजेंसी और यू आर अ पेरोल प्रोसेसर. आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके कस्टमर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पैक्ट हो रही है, तो उस सूरत में आप SOC 1 को इम्प्लीमेंट करते हैं. इट ओनली डील्स विद financial terms and not with privacy and security. Okay. Then there is SOC 2, which is the most common and extensively used type of SOC. It deals with security, processing, availability, privacy, and confidentiality of customer data. आप कस्टमर डाटा को कैसे अपने पास रखते हैं, कैसे आप उसे प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, everything like this falls under SOC 2. It is suitable for any kind of company which is dealing with customer data. That includes cloud providers, SaaS platforms as well. Then there is SOC 3. SOC 3, you achieve SOC 3 after achieving SOC 2. It is less detailed report of SOC 2. ये कोई अलग चीज नहीं है SOC 3. It is just a lesser detailed version of SOC 2 that you can display or share with your clients and customers. So what often happens in this industry, companies achieve SOC 2, then they achieve SOC 3, and they publish the SOC 3 report on their website and only share SOC 2 reports if inquired by some of their customers. Coming back to SOC 2. So whenever we talk about SOC 2, there are two subtypes of SOC 2. One is type 1, other is type 2. So in very basic terms, type 1 uh, mentions that you have implemented all of your SOC related controls, SOC 2 related controls, but it does not imply that you are actually following them. So whenever you go for SOC 2, first you attain type 1. By this, we mean that you implement all the controls, share evidence, and you establish this control only once. Okay. Then we move to type 2. Type 2 has a longer lifespan for this evidence. So it means that you have achieved type 1 and you have been continuously following this type 1 for the last year, last 365 days. It is valid for 1 year only. Okay. So this means that you are focused on SOC 2 and you are committed to SOC 2 compliances as well and controls. And you have achieved those and followed those in the last 1 year. एक साल आपने किया है, then it ends. And for the next year, you also have to again attain this type 2 certificate. Okay, so we have gone through the basic.
Now let's take a little break of 5 minutes. I will share some basic facts with you. Okay. Some Sir, interesting facts. sorry for interrupting, but like, will you take questions towards the end Yes, or? I will take question at the end. Okay, okay, okay. Okay. Okay, there are some interesting facts. President, you have heard that word. That stand for powerful president. I don't know that many of you might have heard about it. So another interesting fact is lizard always run west when they are scared. Just a quick question: how many of you knew that this fact? Okay, one. Anyone else? No. Okay. If you try to crack an egg with one hand in your palm, with your hand and fingers wrapped around it, it won't crack. Okay. So you have an egg like this, and you do it like this, want to crack it, so it won't crack. Okay. So this is another interesting fact that many people might not know. Moving forward, you can just read about it here as well. Studies have shown that if you say studies have shown at the beginning of your fact, people 83% more likely to believe you. I think everyone knows about this fact. This is very common. So last fact is all of these were made up. These were not actual facts. This is what you use in parties and so on. Okay. Okay. So if anyone has any question at this stage, they can ask. Otherwise, we can move forward. You can just unmute yourself and ask a question if there is. No. So let's continue. So now how to implement controls of SOC 2. This is where this gets really boring. All of these will be technical terminologies, technical implementation details. Okay. So I have implemented SOC 2 and HIPAA in a couple of organizations. So below is the categories I have established that I need to implement. So this is for my own journal use, nothing else. Okay. So I defined controls under organizational management, communication control, risk management, access security, asset management, data security, system security, incident response, business continuity and availability, change management. So this is what I define my categories as my categories. You can define your own categories. Basically, controls are the same, which I will explain later on. You can categorize them any way you want. This is generally what are followed in the industry as well. I will go through each of these categories and explain all the basic controls which fall under these. So organizational management. This deals with SOC 2 controls regarding all of your organization from management point of view. So first control is that all the new employees and contractors have to be screened. You have to verify their CVs and their data, personal data as well. So I recommend VETI as a tool, which is very cheap and one of the best in this industry. So you can set up VETI account, and whenever there is a new employee or contractor, you can pass their CV and data to VETI. So VETI will contact that person and get more details from them, verify them in the existing databases as well, and give you final report. So this way, you know that whenever you hired a new employee or contractor, onboarded them, what they have mentioned in their CV is true. They are truthful, and they will not harm your business, or they are least likely to harm your business.
Another is confidentiality agreement. If you need to have a confidentiality agreement, and employees and contractors should sign it before they onboard. So when you offer them, give them an offer letter, you should also get them to sign a confidentiality agreement. There are plenty of templates available online. You can use any one of them and just get it reviewed by your lawyer or legal department. So as part of the SOC 2 requirement, you should create, maintain, store, and share as evidence all the job roles and your job description. So what happens most of the time, especially with startups and especially in Pakistan, we just create a new job. Okay, we need a software engineer in Node.js. So what that person needs to do, what is their JD? We never discuss that, never publish that, never store that. We just hire that person. So SOC 2 requires that whatever the role is, even if you are hiring a janitor or you are hiring a CEO, that job description and job role should be properly documented and it should be updated at least once annually. So I prefer using Google Drive to store this document. You can use any other tool that you like for this. Security team. So you need to establish a dedicated security team in your company. What is preferred and recommended is you have at least one dedicated security person available in your team, but often it is not possible. So what you can have is 3 4 different people who are part of your security team, and they are spending at least 2 to 3 hours per day on this activity, security related activities. Okay. So security team must conduct their meeting at least once every quarter, but it is generally recommended to have this meeting on monthly basis. Each meeting should have basic agenda and meeting minutes as well. In this meeting, you can discuss actual security incidents that happened in the last since the last meeting, but were not something that required immediate attention. Or you can just conduct tabletop exercises. So, few of you might not be familiar with tabletop exercises. This is where you simulate what an actual incident might look like and what your response should be. So in SOC 2, you will very likely to hear this word again and again, tabletop exercises. There are plenty of templates available online. So you come up with a scenario. Someone accessed our database from an IP which is not part of our organization whitelist. Okay. So this is a scenario. How this happened, how you found out about it, and how you need to handle it. This whole simulated process is called a tabletop exercise. So when you are creating the agenda for the meeting, you need to mention whether these will discuss proper security incidents or will just discuss tabletop exercise or both. So you need to properly create meeting minute for these meetings. Okay. Because these meeting minutes will be used as evidence when attaining the SOC 2 report. Okay. So one more thing that I like to do, which is not mentioned here, and it is not followed extensively in Pakistan in smaller organization, but it should, is having documented information security policy, physical access policy, and so on. These should be documented, and these should be reviewed by your every member of your team at least quarterly. So whether they are part of the security team or not, they should review this and digitally sign that they have read the document. As part of SOC 2, you need to have a proper organizational chart. You need to create it, maintain, store, and share it. Okay. You can use any tool. I prefer to save the image in Google Drive.
but you are free to use any tool that you like. Employee performance review. You need to plan properly with performance reviews. It's not that at the end of every year you just sit down and say, okay, you get this much raise, you get this much raise, or decrement as well. You need to have properly documented criteria for each job role and job person. And these criteria should be shared by the employees as well. You need to document these criteria and record any kind of employee feedback. All of this will go into evidence for SOC 2. So whenever any new employee join your company, or even if they are contractor, they need to go through the basic security training. So I recommend Asset for this, ESET. They offer a free service as well, and they are very good in this respect. They have the basic security training. I think it takes about 40 minutes to complete this training, and you can have this under a free plan as well. So last thing is you have to continue monitoring these controls for the period. It's not like you have created a security team and after 3 months you are not conducting their meetings. You need to continue monitoring this control. And let me mention a couple of HIPAA specific controls as well, which are not part of the SOC 2. EPHI, Personal Health Information PHI, and EPHI is electronic record. How you handle these records and who has access to these records, this should be properly documented. You can create a role matrix of what each role can access or modify. And you need to have HIPAA specific employee training. This takes about 1 hour in total for each employee. And you need to have business associate agreements with your vendors who are processing any kind of EPHI data. So next topic is communication control. You need to have a proper and defined channel to share any kind of security, privacy, and product updates to the internal users. You can have a simple Slack channel, you can have a email list, whatever you prefer. But there should be a documented channel, and you need to share a couple of screenshots of it as evidence that you are able to communicate these updates with your internal users. I prefer email, but you can use anything that you like. External communication, same thing, but in a less detailed manner, should be shared with your customer and vendors. That includes any kind of downtime that is either scheduled or was an unscheduled one. But it should be very less detailed compared to internal communication, and you don't need to share updates regarding security and privacy updates. If there is any kind of data breach, or security breach in your system, then as per local laws, you might need to inform law enforcement agencies as well. So you need to have a proper channel for this. How you will do this? You need to have proper mechanism who can share this information with law enforcement agencies. How you will handle the their response and what kind of information you need to provide to those. So risk assessment. This is also called a vendor management as well. हर बिजनेस के साथ रिस्क होते हैं, हर ऑपरेशन के साथ रिस्क होते हैं, आप सबको पता है. So you need to assess these risks in advance. So I will share a couple of examples as well. So these are a couple of statements regarding risk assessment. Does the company use data sanitization and or masking of confidential or sensitive user data in development and staging? क्या आपकी कंपनी ऐसा करती है कि एक्चुअल यूजर का डाटा उसे मास्क कर दें या सैनिटाइज करें, लाइक
For example, you have user phone numbers that are in the production data, but you remove those phone numbers and replace them with dummy numbers in your staging and development data. If not, then this is a risk. You need to properly categorize this risk. Same goes for a removable media like USBs, how you handle them in your company, how you record disposal of PHI data, or if someone requests that I need my records removed from your system, how you will handle it. These are the risks. In the last scenario, for example, you remove someone's record, how will it impact your user and financial data? For example, you want to see some report from 2021. Will those record appear there or not? How you want to handle it? These are few example of the risk. Obviously, you will know your business and business operations in a much better way, so you can come up with your own risk. So you need to maintain those risks in a risk register. You need to evaluate those and assign them a score and likelihood and possible treatment. So score can be anything. For example, you have a criteria 1 to 5, 1 being the least impactful and 5 being the most impactful. You can come up with your own criteria as well. Likelihood is how likely they can happen. Okay, very likely, least likely, often, anything like that. And when they happen, what kind of treatment you will take. So you need to keep it in a risk register. It can be a proper Excel file or any software solution as well. And you need to keep it regularly updated. So same goes for vendor management. You have different vendors associated to your system that might have access to your user data. How you will handle that? If their service goes down, how will it impact your business? And can I quickly ask how many of you guys are using cloud providers? AWS, GCP, Azure, anything else? Can you raise your hands if you're using cloud provider? So, for example, your data is on AWS. For whatever reason, AWS goes down, even if it's for the 1 day. How will it impact your service? Have you guys thought about that? It's a vendor. AWS is a vendor. So you need to come up with these kind of strategies. You are, for the sake of this conversation, you are using Stripe as payment processor. Stripe deactivates your account. Now what will happen to all the payment data and the new transaction to your system? So these are all the risks that you need to identify and handle beforehand. So enough of the technical terms. Let's take another pass. So I'm going to ask a couple of things. You can just speak or write in the chat. Look to your left and mention the first thing you see. Anyone? बोल भी सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे. सर ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसका लिंक डेटा साइंस के साथ है? इसका डेटा साइंस के साथ नहीं, इसका सिक्योरिटी प्राइवेसी के साथ है सारा. ये SOC 2 का. यानी कि साइबर सिक्योरिटी में आता है इसका? जी, साइबर सिक्योरिटी में आता है ना? आपकी आवाज जरा मुझे समझ नहीं आई. यानी कि साइबर सिक्योरिटी की कैटेगरी में आ जाता है ये कोर्स? हाँ, ये साइबर सिक्योरिटी में रहता है, प्राइवेसी में ज्यादा आता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. सर इसकी एक प्रॉपर फील्ड यानी कि इसमें मास्टर्स हो रहा हो या कोई और चीज इसमें हो रही है, वो कौन सी है? इसके मास्टर वगैरह नहीं होती. इसके एक जर्नल आपके प्रिंसिपल हैं. Actually, I can explain more about this at the end of this. Yeah. ओके सर, थैंक यू. Okay, presentation. So headphone, mirror, wall वालों को कोई बेटर व्यू करना चाहिए.
ग्लास, माई सेल्फ, ये शायद आईने के सामने बैठे हैं. ओके, Ubuntu terminal, good. Water bottle, chair. So moving on to the next one. What was the color of shirt you wore on last Sunday? जो अभी संडे गुजरा है, उस दिन कौन सा आपका शर्ट का कलर था? So good. और काफी लोग सुन रहे हैं अभी इसे. What was the name of your first pet? Good. What will be your superpower in Marvel or DC Universe? मैं अपनी बता देता हूँ. सुपर पावर मेरी ये है कि जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं किसी को भी सुला सकता हूँ. अभी शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया हो ऐसे. इसके अलावा फ्लैश, सी थ्रू पीपल. गुड. वैसे बड़ी खतरनाक है माइंड रीडिंग. बहुत ही खतरनाक पावर है. टाइम ट्रैवल बड़ी अच्छी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सेस सिक्योरिटी. So how people or your staff can access. This includes physical security as well. They can access your system. Any kind of system that has user data requires proper 2FA. This includes your admin panel, CRM, Gmail, Git, anything that can impact your production system. It requires a 2FA or TOTP, time-based one-time password. आपके पास अगर गूगल ऑथेंटिकेटर या ऐसी ऐप है या आपका SMS आता है, that's TOTP. Okay. So you should enforce MFA, password complexity, lockouts on all screens, all systems, sorry. चाहे वो आपका CRM है, AWS है, Gmail है, कुछ भी है, एडमिन पैनल है, आपको वहाँ होना चाहिए पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी पॉलिसीज होनी चाहिए. आप AWS में जाके अपने रूल डिफाइन कर सकते हैं that your password should be at least 10 characters long. It should include 2 special characters and so on. इस तरह का रूल. और आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने चाहिए, लाइक 2FA हो, TOTP हो, इवन 3FA हो. आपके इम्प्लीमेंट लाजम होना चाहिए. एंड यू नीड टू प्रोवाइड दीज एविडेंस एज पार्ट ऑफ SOC 2. आपको उनकी प्रॉपर स्क्रीनशॉट शेयर करनी पड़ती है, AWS, Gmail, एडमिन पैनल एंड सो ऑन की. You need to use a proper password management solution. It can be one password or any kind of its competitor. Okay. You have to always implement, और ये SOC 2 से रिलेटेड नहीं है, आपकी एक जर्नल प्रैक्टिस है. ठीक है. आपको हमेशा लीस्ट एक्सेस प्रिविलेज वाला क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए. सो you should give anyone least possible access in your system, whether these are AWS accounts, your admin panel and so on. Whenever they require a new access, आपने अगर शुरू की है AWS पे, आपने सिर्फ उन्हें अपना अकाउंट मैनेज करने की दिया है, एक्सेस दिया, उसके बाद उन्हें ज़रूरत है EC2 की. So they should properly request this and you need to log these requests. कि फातिमा ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे EC2 का एक्सेस चाहिए कैसर के पास. फातिमा ने रिक्वेस्ट की है, इस डेट को किया, ये रिक्वेस्ट थी, ये हमारे सिस्टम पे इम्पैक्ट आ रहा है, एंड नाउ कैसर इज गोइंग टू अप्रूव इट. और फॉर एग्जांपल कैसर हैज अप्रूव्ड इट एंड शेयर्ड इट विद एसन. नाउ एसन इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. सो it was requested by Fatima, approved by Qaiser, implemented by Hassan. You need to have this complete record along with dates. And you have to periodically build their accesses over the. And again, remember, I have seen this a lot.
that often software engineer and DevOps team thinks access to the production system is their right. You need to remember this is not a right, this is a privilege. You can have all kind of access for the dev environment and staging environment, but for the production you need to earn those rights. So hence we always follow least access principle. You need to have proper onboarding checklist. So it's not like someone came in and then you are deciding that what to do with them, what kind of access you need to provide them. You need to have a proper document mentioning that for role of software engineer, they should go through these kind of activities and they should get, for example, access to Git, access to dev database or then dev environment and so on. For the DevOps, they need to go through these kind of activities, XYZ activities, and they need access to CI/CD pipelines, Git, and so on. So you need to have defined checklist for each role, and you can have general checklist as well. And you need to share it as evidence with your auditor. In case you change access of existing users, you need to modify their report. So you have to create report for every single user. कैसर ने ज्वाइन किया था, कैसर को आपने ये एक्सेस दिया, जीमेल दिया, AWS दिया, नाउ कैसर को आपने AWS के अलावा GCP का एक्सेस भी दे दिया. So you need to modify that file or access list. Just like that, you need to have a termination checklist as well. And every single activity in the termination checklist should be followed within 24 hours of termination. और ये आपने evidence share भी करना है. So your onboarding checklist can be an input to this checklist or this process. You need to periodically review all the accesses in your system, document everything. You can change these accesses, just document everything. It is recommended that you should do this activity at least once every quarter. Security team can do this. And another thing, when you are doing these activities, you cannot audit or change your own access. ये नहीं है कि आप कहें कैसर आके कहे कि अच्छा यार मेरे पास तो प्रोडक्शन सिस्टम का एक्सेस ही नहीं है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, चलो मैं खुद को प्रोडक्शन सिस्टम का एक्सेस दे सकता हूँ. So that's why you should have at least 2-member teams. In big organization, they have dozens of people for this, but in smaller, you should have 2-member team, and this can be a part-time activity. You don't need to have full-time employees for this activity. Asset management. So one thing about asset in terms of SOC 2, any kind of physical device, whether you own it or not, if that can process customer data, it is an asset. So आपका AWS पे जितना कुछ है, जो है नेटवर्क है आपका, वो सारा आपका एसेट है. आपके क्लाउड फ्रंट या कोई भी और CDN है, वो आपका एसेट है. आपके बैकअप्स हैं जिनमें कस्टमर का डाटा पड़ा हुआ है, वो आपका एसेट है. आपका लैपटॉप एसेट है, आपका मोबाइल एसेट है, कस्टमर आपकी टैबलेट्स बनी हुई है, दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू in terms of SOC 2. So you need to have 2 separate network architecture diagrams. One is a very high level diagram which you need to update very often. Other is a very low level and detailed diagram. आपकी अगर ऑटो स्केलिंग लगी हुई है, ऑटो स्केलिंग के अलावा आपके 3 सिस्टम है, उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं, आपके किस किस पोर्ट पे आपके क्या अलाउ है, ये सब कुछ आपके लो लेवल डायग्राम में आता है. आपके हाई लेवल में इतना डिटेल नहीं, हाई लेवल में आप बता देते हैं ओके हमारा एक लोड बैलेंसर है, उसके पीछे हमने ऑटो स्केलिंग लगाई हुई है, दैट्स अबाउट इट. इसके अलावा जो कुछ आपने किया हुआ है, आपको पोर्ट्स और नेटवर्क डिटेल्स और सब नेट पे जाने की जरूरत नहीं, लो लेवल में जरूरत होती है. फॉर SOC 2 only high level diagram is required, low level is not required for SOC 2. लेकिन आपके बाकी कुछ स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क हैं उसमें आपके लिए रिक्वायर्ड होती है, so it's better to create one. बाय द वे फॉर AWS इसके लिए आपके पास एक सर्विस भी अवेलेबल है जो आपको लो लेवल डायग्राम्स और हाई लेवल डायग्राम ऑटो जनरेट करके दे देती है आपके सिस्टम के अगेंस्ट.
क्लाउड में पर है, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, मुझे नाम भूल गया, लेकिन AWS में एक सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास डाटा फ्लो डायग्राम भी होनी चाहिए। आपका डाटा कैसे जा रहा है, किस सर्विस से कहाँ जा रहा है, कहाँ इनक्रिप्ट हो रहा है, कहाँ डिक्रिप्ट हो रहा है, इट शुड बी मेंशन्ड हियर। Okay. You need to have malware defense on each of your system. Antivirus, anti-malware devices like Bitdefender, you need to have this on your systems and enabled. So एक दफ़ा ये मेरे साथ हो चुका है कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे हिपा को। हिपा में भी रिक्वायर्ड है सेम चीज़ें। So हमारे एक यूज़र का डिवाइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था। Why? उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर, लेकिन उसे अनेबल नहीं करते थे। अनेबल इसलिए नहीं होता था कि उनके सिस्टम में एक वायरस था। सो यू नीड टू हैव दिस अनेबल टू बी काउंटेड आपके एविडेंस के अगेंस्ट। Inactivity lockout. So if you are away from your device or hasn't performed any kind of activity for 15 minutes, your system should automatically lock you out and you need to provide a password to re-log in. हमारे अक्सर लोग करते हैं, अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं कि फुली ओपन स्क्रीन है, आपकी क्लोज ना हो। नॉन टेक्निकल जो नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉन टेक्निकल हैं वो करते हैं कि आपका स्क्रीन सेवर चल जाता है, आप क्लिक करें स्क्रीन सेवर खत्म और आप वापस सिस्टम में आ जाते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग पासवर्ड। सो आफ्टर एवरी 15 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी यू शुड बी प्रॉपरली लॉग्ड आउट और लॉक्ड एंड यू नीड टू प्रोवाइड योर पासवर्ड टू री लॉग इन। ये एक रिक्वायरमेंट है, आपको एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। So for the mobile devices, you need to have some kind of a device management system. I recommend Fleetsmith, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है, आपके सारी डिटेल ले देता है सिस्टम की। आप रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं सिस्टम को, बट यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ टूल फॉर दिस। अहमद ने हाथ खड़ा किया। अहमद जी। जी सर सर पूछना ये था कि जैसे आप टू में वो एविडेंस देखेंगे सिस्टम में नहीं आएंगे, तो क्या हिपा के केस में भी ऐसे ही होगा? हाँ, हिपा के केस में भी ऐसे ही है। दोनों जगह पे आपको एविडेंस देना पड़ता है। स्क्रीन शॉट्स हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, कुछ भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकती हैं, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए अगर आपके पास फ्लीट स्मिथ है या इसके बहुत सारे कंपेटिटर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वो आपको फुल डिटेल रिपोर्ट देते हैं। कैसर का सिस्टम है, इसमें एंटीवायरस XYZ इंस्टॉल्ड है, अनेबल्ड है, एंटी मेलवेयर ये वाला सिस्टम है, इसमें पासवर्ड पॉलिसी ये वाली है, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आ जाती है आपके सिस्टम की। So each device should have हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन enabled. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके हार्ड डिस्क हमेशा इंक्रिप्ट होने चाहिए। एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, एंटी मैलवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, OS अपडेट्स रेगुलरली इंस्टॉल होने चाहिए। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द प्रोडक्शन सिस्टम्स एज वेल। आप, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैंने ऐसे सिस्टम्स पे काम किया जिन्होंने 5-5, 6-6 साल OS के अपडेट्स ही नहीं इंस्टॉल किए अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स पे। So that need to be regularly updated. आपको शायद अभी भी कोई मिल जाए सिस्टम जो Ubuntu 14 यूज कर रहे हो या Windows XP यूज कर रहे हो, तो जरा इन चीजों को अवॉइड करना होता है इसमें। Obviously enable firewalls, location सर्विस एंड रिमोट लॉकिंग। आपका कोई मोबाइल डिवाइस था, इट कैन बी अ टैबलेट एज वेल, या इवन आपका लैपटॉप, जिसके जरिए आपका प्रोडक्शन का डाटा एक्सेस हो सकता है। कहीं आपका चोरी हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है। सो एनीवन दैट लॉग्स इन, अगर आपने स्पेशली अगर पासवर्ड पॉलिसी नहीं लगाई हुई, वो खोल के आपका प्रोडक्शन का डाटा सारा डिलीट कर दें, आप क्या कर लेंगे? सो यू नीड टू हैव लोकेशन सर्विस enabled एंड रिमोट लॉकिंग enabled एज वेल, कि आप रिमोटली अपने सिस्टम को लॉक कर सकें। अगर आपके पास गूगल के एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या एप्पल के iOS हैं, तो आपको
देखा होगा आप रिमोटली उनके वेब प्लेटफॉर्म पे जाके अपने मोबाइल फोन्स को ऑटोमेटिकली लॉक कर सकते हैं, या इवन आप लोकेट कर सकते हैं, इवन आप उन पे अपनी रिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारा इसी के अंडर फॉल होता है। अगेन, लॉक स्क्रीन आफ्टर 15 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी, कॉन्फ़िगर रिमोट वाइप ऑफ डाटा व्हेन अवेलेबल। ये ऑप्शनल होता है, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड होता है। रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रेफर्ड है कि आप रिमोटली डाटा भी वाइप कर सकें, ठीक है, किसी भी डिवाइस का। ऑब्वियसली एनेबल कम्प्लेक्स पासवर्ड पॉलिसी ऑन डिवाइसेस, ये एविडेंस में भी आती है वाली चीज़ कि आपके पासवर्ड पॉलिसी क्या सिस्टम के ऊपर लगी हुई। नाउ टू द डाटा सिक्योरिटी पार्ट, obviously you have to enable encryption, whether it's data at rest or data in transit. Data at rest आपका कोई भी EC2 हो गया. By the way, I'm mostly using AWS terminologies here because they are the most used cloud platform, but you can use any kind of system. Even अगर आप cloud platform use नहीं कर रहे, आप dedicated servers use कर रहे हैं, वहाँ भी आपको ये चीज़ें सारी implement करनी होती हैं. Data in transit SSL TLS के जरिए आप implement कर सकते हैं, ठीक है। आपके स्टोरेज है, EBS के आपके बैकअप्स, आपने स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं, डेटाबेस के बैकअप्स हैं, एवरीथिंग शुड बी इनक्रिप्टेड। आपके S3 के बकेट्स हैं जिनमें किसी किस्म का यूजर डाटा स्टोर होता है, वो आपके प्रॉपरली इनक्रिप्टेड होने चाहिए, उसके सर्वर साइड इनक्रिप्शन ऑन होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई S3 की बकेट ऐसी है जिसमें आपका कस्टमर का कोई डाटा नहीं है, आपके वेबसाइट के CSS और JS फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उससे आपके इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, ओके ये हमारी S3 की बकेट है, बट दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस XYZ रीजन। यू कैन मार्क योर एसेट्स एट आउट ऑफ स्कोप, बस आपको बताना पड़ता है क्यों आउट ऑफ स्कोप है वो आपके सिस्टम से। डाटा रिटेंशन एंड डिस्पोजल पॉलिसी। How many of you here are dealing with mobile application in iPhones, iOS based mobile applications? किसी भी रोल में आप डील कर रहे हैं, फिर अगर आप वहाँ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा AWS की पॉलिसी आजकल वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका लॉगिन है लेकिन आप यूजर्स को एक्सेस नहीं दे रहे कि वो रिक्वेस्ट कर सके अपने अकाउंट डिलीशन, तो आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाती है, इवन अपडेट्स भी रिजेक्ट हो जाती हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ देयर कंप्लायंस विद SOC 2। आपको अपने सिस्टम में हमेशा ये फैसिलिटी देनी है, आइदर इट्स योर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और एनी अदर थिंग, यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर देयर डाटा टू बी डिलीटेड फ्रॉम योर सिस्टम। फेसबुक, जीमेल, ट्विटर, आपने इन सब पे देखा होगा ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हिडन पड़ा होता है, लेकिन मौजूद होता है। सो जब भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आए, आपको प्रॉपरली लॉग करना है, जो भी आपने एक्शन उसके अगेंस्ट लिया है आपको वो सारा मेंशन करना है। Now everyone should not be able to delete your data from production system. You need to restrict it to one or at max two people, nothing more than that. Okay, there are some exceptions to this, especially for EPHI. You can retain the data for up to 6 years after creation or last use date, whichever is the latest one. तो क्रिएशन या लास्ट यूज की डेट जो भी इसमें से बाद में आई है, उसके बाद आपको 6 ईयर तक आप डाटा रिटेन कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एनीवन एल्स। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने डाटाबेस से डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी एक इंपोर्ट लेके, वो एक्सपोर्ट लेके, सॉरी CSV एक्सपोर्ट लेके आपने कहीं सेव कर लिया, यू कैन डू दैट। then there are some legal requirement as well. For example, in USA, in most of the states, you have to, regardless of whether someone has requested or not, you have to keep their data for 3 months. In Australia, it's 6 months. रीजन टू रीजन वेरी करता है, लेकिन आपको लोकल जो भी रेगुलेटरी है कंप्लायंस, उसके साथ भी आपको डाटा रिटेन लाजमी करना है।
Now on to the system security. You need to have vulnerability scanning in place, and it needs to be done at least 1 month, once every month. Required है आपका कि once every quarter, but you should do it at least once every month. It should be on all in-scope systems. जो भी आपके databases, codes, everything, आपको इस पे vulnerability scanning चलनी चाहिए. जो मैं करता हूँ प्रेफर करता हूँ कि सोनार क्यूब इम्प्लीमेंट हम लोग कर लें. जैसे ही आपकी कोई पीआर बनती है गिट पे, तो सोनार क्यूब के जरिए हम उस पर vulnerability scanning कर लें. उसके बाद आगे चलें. But you can use any tool that you like. GitHub also provides a vulnerability scanning service, and you do need to have dependabot enabled on your GitHub or GitLab or anything that similar you use for code management. Okay. मोबाइल ऐप के लिए आपको SAST और DAST करना पड़ता है. ये भी कोड एनालिसिस होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक कोड एनालिसिस. ये आपको लाजमी परफॉर्म करना पड़ता है और आपको एज एविडेंस इसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है. मुझे इस टूल का नाम भूल गया, लेकिन एक इसके लिए ओपन सोर्स टूल अवेलेबल है. आपको पेड सर्विसेज लेने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती. Penetration testing, now this is a tricky part. You need to hire some third party to do a penetration testing at least once every year. Recommended is every 6 months. They cannot be part of your system in any way. आप ये नहीं कर सकते इंटरनली किसी को कह दें पेन टेस्टिंग कर दो या किसी एक्स एम्प्लॉय को हायर कर लें. They should be someone who have never worked with your system before. इसकी रिपोर्ट भी एज एविडेंस आती है आपकी. The rest is you need to log all kind of events and enable alerts in your system. For example, आपकी EC2 की सर्विस डाउन होगी, आपके क्लाउड वॉच अलार्म्स लगे हुए हो, क्लाउड वॉच लॉग्स पे सब कुछ आ रहा हो. ठीक है. You need to enable threat detection on your production environment. AWS Guard Duty is a very good tool for this. आप कोई और भी कर सकते हैं, GCP भी देता है, Azure भी देता है, आप कोई थर्ड पार्टी सिस्टम भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. But you need to enable it on your all of production environment. Stage और beta पे required नहीं होता, dev stage beta पे, but on production it is absolutely required, and you need to provide this report or screenshot as evidence. Obviously firewall आपके enable होने चाहिए, AWS Web Network, ACL, security groups, these should be enabled. You need to review these rules at least once every 6 months in your security meeting and document this, that these were the rule we have reviewed and what action have we taken, we kept them, changed them, whatever. So यहाँ मैंने इसके अलावा AWS पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं. So I have attached that as an Excel file. इसके अंदर आपको 100 के करीब मिल जाएंगे रूल्स जो हमने फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल रूट अकाउंट पे कैसे MFA सेटअप करना है, कहाँ कहाँ हमने लॉग्स करने हैं, किस किस्म के हमने क्लाउड वॉच के अलार्म सेटअप करने हैं. सो एवरीथिंग दीज आर इन टर्म्स ऑफ AWS. You have to follow similar action for GCP and Azure or any other cloud provider. So Fatima will share the slides after this presentation, after this meeting, और उसमें आप एक क्लिक करके इन्हें रीड कर सकते हैं डिटेल में. So let's take a pause, catch our breath. इसमें अब बड़ा इम्पोर्टेंट सी इजी सी चीज़ है. आजकल फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, सारा फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. ओके, सारे से फॉलो कर रहे हैं फीफा को. तो अभी मैं कुछ फेडरेशंस के जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप का पार्ट है उनके एम्बलम्स आपके सामने लाऊंगा. आपको गेस करना है कि किसके हैं. सो ये किस कंट्री का एम्बलम है? एनीवन?
बोल के कर लें, लिख लें चैट में। कोई नहीं यार। अर्जेंटीना क्लोज साकिब। शायद मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इट वाज फॉर यूरुग्वाई। ये तो बहुत इजी है, ये तो उस कंट्री का वैसी फ्लैग है। अगेन नोबडी इज फैन ऑफ वर्ल्ड कप और फुटबॉल। तारिक काफी क्लोज हैं। दिस इज अबाउट वेल्स। वेल्स जो यूके का पार्ट है उसका है। इसमें तो नाम लिखा हुआ है कंट्री का। यस, कोस्टा रिका। सी आर कोस्टा रिका। सो दिस इज वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी। अफ्रीकन नेशन जिसका फ्लैग भी शो हो रहा है as part of emblem. यस, घाना। सलमान सुहेल दोनों का ठीक है, घाना। नो, दिस इज नॉट पुर्तगाल। ये काफी मुश्किल है। दिस इज सर्बिया। यस, फातिमा, सर्बिया। फाइनली फातिमा। This also contains the name of this country. Yes, Salman, Saudi Arabia. This one is tricky. Yes, this is Ecuador. फातिमा ने लिस्ट तो नहीं खोली फातिमा आपने कहीं? So this is last one. Yes, most famous one right now, France. So enough of the break, let's continue. Incident response. जितना मर्जी आपने सिस्टम को बेस्ट बनाया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट anything can happen. There is always some idiot with a laptop who can break into your system. So what to do when this kind of incident happen with customer data? If it happens with your staging or dev data, then it's a point of concern, but not critical. If it happens with your production data, then what you need to do? You need to have proper plans for this. You need to conduct tabletop exercises for this annually, or preferably after 6 months, where you discuss this kind of scenario. Okay, something happened. So Qaiser was an employee who was leaving, and he changed all the passwords to production database. Now what? How you will handle this scenario? You need to come up with tabletop exercises, prepare your responses, and share it as evidence. Security team obviously will do this. They need to simulate internal external communication. So if any kind of incident happen, they need to draft, for example, if they are using emails, they need to draft proper emails and send it to internal user. That can be only the member of security team for now. Or if that's checklist, you can mention at the top that it is a tabletop exercise, not a real communication. Same with the external communication. You just put in draft a full email, but send it to internal security team members. Now that was a tabletop exercise. What if that incident actually happens? What will you do? First, look at the table of top exercise if you have ever covered in a tabletop exercise scenario. If not,
you need to find the similar scenario from tabletop exercising and continue your plan from that specific exercise. But every single step should be investigated and properly documented, whether it's in terms of text, images, or even a video. I think about a year ago, I came up with a scenario. We faced a scenario that an employee which left about 2-3 months earlier, his AWS account was still in use. So we started investigating it and we were taking pictures at every step. So if needed, we can provide that. Okay. So you can also take a video of this process if it's easier for you, or just list down all the steps you have taken. Obviously, communicate with internal, external stakeholders. If that requires communication with law enforcement, then you need to enact that plan that you had created earlier. Lesson learned. ये बहुत अहम चीज़ है. गलती हो गई है तो अब उसका मुदावा कैसे करना है, हमने उससे क्या सीखा है. अगर फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं देखा कि एम्प्लॉय चला गया, उसका AWS अकाउंट अभी तक इन यूज है, तो क्या दोबारा हमने वही काम करना है कि कोई एम्प्लॉय जो है उसका AWS अकाउंट डिसेबल ना हो, या उसे लेसन लर्न करके आइंदा उसे रोकना है. And this should be properly documented for your internal team. This is not required for evidence. I think you can provide it as evidence as well, but this is properly for your internal team. So कैसर ने अगर हैंडल किया सिनेरियो आज के दिन में, कैसर अब कंपनी छोड़ के चला गया, तो नया कोई बंदा आया, फातिमा ने ज्वाइन किया कैसर की जगह पे. सो फातिमा क्या नए सिरे से करेगी, या फातिमा के पास होना चाहिए कि अच्छा ये काम पहले हो चुका है, इससे हमने ये सीखा है और आइंदा हमने इसे ऐसे रोकना है ताकि गलती होने ही ना दे फातिमा. सो वी ऑलवेज नीड दिस लेसन लर्न प्लान. Okay, you can have this in Google Drive, Confluence, anything that you like. Business continuity and availability. This is very paramount. Not only this is required for all this kind of certification, but also this is a general thing. आपके बिजनेस को हमेशा आपके पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए. जैसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा था कि स्ट्राइप आपका डाउन हो गया, आपकी पेमेंट कैसे प्रोसेस होंगी. AWS आपका डाउन हो गया, आपका क्या होगा. So you need to have business continuity and disaster recovery plans, and again you need to conduct tabletop exercises annually to simulate this kind of scenario and how you will handle that. लाजमी नहीं है सिर्फ ऑनलाइन वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. पाकिस्तान में आपका एक और भी सिनेरियो बड़ा कॉमन है कि अचानक नेट बंद हो गए. अब कैसे होंगे, आपकी टीम कैसे एक्सेस करेगी सिस्टम्स को. आप इन ऑफिस काम कर रहे हैं, रास्ते में स्ट्राइक हो गया, आपके एम्प्लॉयज आ ही नहीं सकते अब ऑफिस. अब क्या एक दिन या जब तक स्ट्राइक चल रही है आपका टाइम जाया हो, या आपने कैसे उसे बिजनेस कंटिन्यूटी को करना है. सो यू नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस सिनेरियोस. डेटाबेस बैकअप लाजमी है, हर कोई लेता है, ठीक है. डेटाबेस बैकअप शुड बी टेकन एटलीस्ट वंस एवरी डे. स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, बट यू कैन कॉन्फ़िगर शॉर्टर पीरियड इफ नीडेड. कि आप कहते हैं वंस एवरी डे, नहीं मैं वंस एवरी आवर लेना, ठीक है आप लें. एवरी काइंड ऑफ बैकअप नीड टू बी रिटेन्ड फॉर 7 days. By the way, you can configure auto backup in AWS. So all those backups need to be retained for at least 7 days. You can have your daily backups retained for even longer, but it's your choice. And you need to have activities to restore and test these backups. ये ना कि आप बैकअप लिए जा रहे हैं, कभी जरूरत पड़े आप रिस्टोर करें तो पता लगे आपका बैकअप रिस्टोर ही नहीं हो सकता XYZ रीजन की वजह से. So you need to run test for restoration. Create a new separate DB, restore a DB backup to that specific DB, try connecting to it and running some kind of queries on it. जो भी आपके बिजनेस की नीड्स हैं बेसिक उसके मुताबिक. और आपने पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना है, इसके स्क्रीनशॉट करने हैं. दिस गोज एज एविडेंस फॉर SOC2. Obviously your system needs to be highly available
एप्लीकेशन एंड डीबी आपकी मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में हो, AWS एजूर में आपका आपका अगर लोड बैलेंसर है या ऑटो स्केलिंग है, तो आपके वो मल्टीपल रीजन्स में एनेबल होने चाहिए, क्रॉस मल्टीपल रीजन, ताकि अगर एक जगह पे आपका सिस्टम डाउन भी हो गया, फॉर एग्जांपल यूएस AWS का रीजन है US East 1, वो डाउन हो गया तो पूरा का पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डाउन हो गया, तो योर एप्लीकेशन कैन बी सर्व फ्रॉम US East 2, ओके, या उसके अवेलेबिलिटी जोन बी से हो सके, इस तरह की चीज़ें। सो वी आर क्लोज, एंड के काफ़ी करीब पहुँच गए। चेंज मैनेजमेंट जो, और ये SOC 2 से इसका इतना रिलेशन नहीं है, आपका जर्नल है। डेवऑप्स के स्पेसिफिक ज़्यादा है। You need to have a proper baseline configuration. And जी अजहर ने हैंड रेज किया, ओके, यार आगे चलते हैं। You need to have baseline configuration of your production server, ताकि आपको दोबारा बिल्ड करने पड़े सर्वर तो आप इजीली कर सकें। AWS में आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। टेराफॉर्म इज़ वेरी गुड टूल, आपने अगर टेराफॉर्म में काम किया है तो यू विल रियली लाइक इट। इसके अलावा SLS फ्रेमवर्क है, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन देता है, सो यू ऑलवेज नीड टू हैव अ बेसलाइन कॉन्फ़िग थ्रू व्हिच यू कैन इजीली बिल्ड योर प्रोडक्शन सर्वर्स एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, एंड इट नीड टू बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड दिस बेसलाइन कॉन्फ़िग। ये ना हो कि आपने एक दफ़ा बनाया है, 2 साल बाद आपको जरूरत पड़ी तो आपको पता लगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर असल में चेंज हो गया था, आपने कॉन्फ़िग चेंज ही नहीं की। These tickets are related to access change, configuration and access change. कैसर के पास प्रोडक्शन डीबी का एक्सेस नहीं था, अब चाहिए, जो मैं एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, तो वो आपका एक टिकट बन रहा है आपके सिस्टम में, जिसे डेवऑप्स ने इम्प्लीमेंट अगर करना है, ठीक है, तो उस GS सिक्योरिटी टीम ने इम्प्लीमेंट करना है, तो दिस शुड बी प्रॉपरली ट्रैक एंड डॉक्यूमेंटेड। वही जो पूरा एग्जांपल पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। Change management, now change management and version control, it mostly mean Git, but in SOC 2 terminology, it also mean your PM methodology, project management. It can be other USDLCs. In PM management, you can have Scrum, Agile, any of the Agile frameworks, Kanban, anything you like. So that need to be properly defined and implemented. ये नहीं कि मैं आज कह दूं मैं स्क्रम इम्प्लीमेंट किया हुआ, एक्चुअली मैं डेली के टिकट खुद जाके टीम को साइन कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जो भी आपने डिफाइन किया वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और उससे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट आपने करना है। यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के बेस्ट इसके सिनेरियो आ जाते हैं। कौन से लोग आपके प्रोटेक्टेड ब्रांचेस पे कोड पुश कर सकते हैं किट में, कौन लोग हैं जो प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप पूरी टीम को एक्सेस दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को होना चाहिए ताकि आप इजीली ट्रैक कर सकें। आपकी जो भी न्यू प्रोडक्शन की बिल्ड की है उसके अगेंस्ट प्रॉपर आपके रिलीज नोट्स बनने चाहिए। यू कैन ऑब्वियसली टेस्ट विद ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्क्रिप्ट, आप किसी CI/CD पाइपलाइन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, आप में से कितने लोग अपने गिट में पीआर रिव्यूज को करते हैं, कि पीआर आपका कोड, यानी कि पीआर आपकी रिव्यू होती है, पीयर रिव्यू आपका होता है। एक और, सिर्फ एक ही करते हैं, दो, मजीद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका इसका SOC 2 से रिलेशन तो है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी जो पीआर बनती है, यू कैन डिफाइन पीआर टेम्पलेट्स इन .github डायरेक्टरी इन योर कोड, okay, these PR templates are only related to GitHub, they are not implemented on GitLab as of yet, लेकिन आपके PR templates होने चाहिए, आपकी रिव्यू की पॉलिसी होनी चाहिए जो GitLab पे भी है, Bitbucket पे भी है, GitHub पे भी है, कि how many people should review your code before it goes into any kind of your protected branches. So for bigger system you can have 2 or 3 peer reviews, for smaller system you can even have 1 peer review, but that need to happen, and having templates is very much recommended.
PR templates. You should always tag your PRs appropriately. आपके ब्रेकिंग चेंज है, आपके हॉट फिक्स हैं, रेगुलर चेंज है, आपकी प्रॉपर टैगिंग चलनी चाहिए पीआर के साथ, ताकि जब भी कभी जरूरत हो आप पूरी पीआर हिस्ट्री देखें तो आपको इसलिए आइडेंटिफाई हो उसका चीज़ें. And obviously set up CI/CD pipelines for deployment to production. And उसी में आप vulnerability scanning और automated testing भी कर सकते हैं. Protected branches का थोड़ा पहले explain कर दिया मैंने. This is very important. You need to have separate environments for production, staging, dev, or all other environments that you have. And there should be proper segregation as well. ये ना हो कि आपने डेटाबेस एक ही रखी है, यानी कि DBMS एक ही रखा है उसके इंस्टेंस, उसी पे आपने डेव, प्रोडक्शन और स्टेज के नाम से ज़्यादा DBs बना दी हैं, और जो बंदा उस सर्वर इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है वो ऑटोमेटिकली सारों को कर सकता है. यानी आपके प्रॉपर सेग्रीगेशन होने चाहिए एनवायरनमेंट्स में भी और डेटाबेसेस में भी. That goes for your physical servers as well. आपका कभी भी एक्चुअल कस्टमर डाटा स्टेज और डेफ पे यूज नहीं होना चाहिए. आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारों को शायद उन्होंने कभी खुद या कैसे उनके पीयर को फेस हुआ हो कि प्रोडक्शन का डाटा डेफ पे उन्होंने कॉपी कर लिया, डेफ पे कोई नया फीचर डिप्लॉय के टेस्टिंग करने लगे, सारे प्रोडक्शन यूजर्स को कोई ईमेल चली गई, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज हो गई, कोई SMS चला गया, कोई भी ऐसा सिनेरियो. So you should always use your dummy data on dev and stage and beta environments. Beta में सच नहीं, लेकिन dev और stage में लाजमी. You need to have patch management enable on all of your production environment or any kind of system, laptop, mobile phone which can access production data. आप अपने automatic OS updates को enable कर लें. AWS की एक system patch management के नाम से सर्विस है, आप उसे करें enable लाजमी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे. ओके, नाउ आपने सारे स्टेप कर लिए, अब आपने क्या करना है? ठीक है, अब ये बड़ा इजी सा है. आपने हर चीज को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है, उन्हें प्रॉपर फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, फाइल्स में कैटेगराइज करना है. आपने फिर एक ऑडिटर फर्म को हायर करना है. आई थिंक देयर आर ओवर 100 ऑडिटर फर्म्स अवेलेबल एज पर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट है उनके मुताबिक, जो कैसे कर सकते हैं SOC 2 को. बट एनी काइंड ऑफ एफिलिएट फॉर AICPA वो कैसे कर सकते हैं. आपको ऑडिटर फर्म हायर करनी है, उसे सारा एविडेंस देना है, वो एविडेंस को रिव्यू करेंगे, आपसे मजीद एविडेंस भी मांग सकते हैं, आपको प्रोवाइड करना होगा. एंड मोस्ट ऑफ द ऑडिटिंग फर्म्स डू ऑफर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज. सो अगर आपने खुद से पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं करवाई हुई थी तो आप इन फर्म्स के थ्रू लाजमी करवा सकते हैं वो. ठीक है, ऑडिट फर्म्स आपको SOC 2 टाइप 1 रिपोर्ट दे देंगी और अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको एक क्रेडेंशियल या बैच भी दे देंगी कि आप SOC 2 टाइप 1 सर्टिफाइड हैं. उसके बाद आपको 1 साल तक इन कंट्रोल्स को रेगुलरली फॉलो करना है, डॉक्यूमेंट करनी है हर चीज़ को, सिक्योरिटी टीम की मीटिंग्स, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस, जो इंसिडेंट हैं, जो एक्शन लिए हैं, एवरीथिंग यू नीड टू डॉक्यूमेंट. न्यू एम्प्लॉयज आए, टर्मिनेशन हुई, कैसे उन्हें हैंडल किया. ठीक है, वो आपको दोबारा ऑडिटर को देना है ताकि वो आपको SOC 2 टाइप 2 की रिपोर्ट दे सके. अगर आपको सारा काम बहुत वैसे मैनुअल काम है, बहुत मुश्किल लग रहा है इसे मैनेज करना, या आप सारे कंट्रोल्स भूल रहे हैं, तो इसके लिए 8-10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, कंप्लायंस प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म्स. वो SOC 2 और बाकी भी इन तरह के स्टैंडर्ड्स को डील करते हैं. उनके जरिए आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो आपका सारा प्रोसेस. ऑब्वियसली आपको खुद इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे सारे कंट्रोल, लेकिन वहां से आपको इजीली लिस्ट मिल जाएगी, एविडेंस इकट्ठा हो जाता है. मैं सिक्योर फ्रेम को यूज करता हूँ, बहुत अच्छी है, मैं रेकमेंड करता हूँ इसे. लेकिन स्प्रिंटो और ड्राटो ये भी दो बहुत मेजर कंपनीज हैं, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा और भी 8-10 कंपनीज हैं. आप सर्च करेंगे गूगल पे कंप्लायंस प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म, आपको काफी लंबी लिस्ट मिल जाएगी. सो नाउ वी आर एट द एंड. अब क्वेश्चंस, किसके क्या क्वेश्चन थे? एक पहले किसी ने पूछा था कि ये किस चीज के अंडर फॉल करता है.
और इस पे वो मास्टर्स वगैरह कर सकते हैं, बैचलर के नहीं। ये उन चीज़ों से हट के है। आपका बैचलर मास्टर एक लॉन्गर स्टडी है। ये वाली चीज़ आपकी बिजनेस के डोमेन के अंदर भी फॉलो करती है, आईटी में भी करती है, सिक्योरिटी में भी करती है। तो बेसिकली आप ये एक आपके छोटी सी सर्टिफिकेशन होती है 3 मंथ की, 6 मंथ की, जिसमें आपको इसकी प्रेपरेशन पूरी बताई जाती है, बट दिस इज नॉट अ डिग्री। आपके बिजनेस वाले मोस्टली से करते हैं आईएसओ से रिलेटेड। स्पेशली आपकी प्रॉपर जॉब्स होती है कंप्लायंस ऑफिसर्स की जॉब्स। इफ योर कंपनी कैन अफोर्ड इट, यू नीड टू हैव अ कंप्लायंस ऑफिसर जो इन सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसी सर्टिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पास में की होती है, और वो इन्हें मैनेज कर सकते हैं। Qaiser? जी So there was a question like chat में अगर आप थोड़ा हाँ, मैं ऊपर वही scroll चैट कर में ही मैं पहुंचा हूँ। जी यहाँ नुमान ने पूछा, I heard that जी these kind of certification, the resources server etc should not be shared among other tenants. When it comes to cloud, EC2 or virtualized are not allowed, but only bare metal. नहीं, ये ट्रू नहीं है। आपके शेयर सर्वर भी हो सकते हैं, EC2 और क्लाउड वो ऑलवेज शेयर होते हैं, और वो इसमें प्रॉपरली सपोर्टेड है उनके जी। आपका ये होता है कि आपके जो इन्वायरमेंट है जहाँ आपका कोड रन हो रहा है वो प्रॉपरली सेग्रीगेटेड हो। आपकी उसी सर्वर इंस्टेंस पे कोई और मौजूद कोड आपके सिस्टम को या डाटा को एक्सेस ना कर सके, तो वो आपके सारे प्राइवेसी सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, बेयर मेटल आपको लाजमी नहीं है, आप क्लाउड पे भी कर सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। Can you elaborate this sort of requirement for this kind of certification SOC2? I think यही चीज है जो एक्सप्लेन किया। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? आई थिंक चैट में तो और मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आई नो इट वाज वेरी टेक्निकल एंड बोरिंग सेशन, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आई हो या पूछना चाह रहे हो तो इवन अगर आपको बाद में भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी और फातिमा। ओके, ईमेल कर सकते हैं, हम लोग आपका लाजमी आंसर कर देंगे। ओके, आई थिंक दिस इज अबाउट इट फ्रॉम मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। काफी हमारा लंबा एक सेशन था, फाइनली एंड हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। फातिमा? Thank you, Kaisar, for the fruitful session. Thank you.